क्या प्रॉब्लम आ गया? 10,000 पेमेंट कर दिया उसने। हाँ आपका कोर्ट का ऑर्डर था, चेक हाँ दिया। हाँ और मदर को तो मीगर पेंशन मिलती है 5,500। हाँ। तो 10,000 कोर्ट ऑर्डर करता तो ही विल बी बाउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, आप किसके लिए हो रही है मैडम? फोर के लिए आप ही को प्रॉब्लम है। कंचन दास, कंचन दास, हाँ। क्यों भाई, माँ को क्यों नहीं आप अपनी केयर करते भाई? रेगुलर पे करेंगे? Lordship, Every month at they least should pay. 20,000 at least. अरे नहीं नहीं, Lordship, इनकी 10,000 salary is reasonable. नहीं नहीं, रिजनेबल थी। one काले minute, साहब आप बैठ जाओ वहीं, आप मत आना, बैठ जाओ। 1 minute, Lordship. नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 10,000। Lordship, 78,000. अरे माँ को देखो, 78,000. मिस्टर कौंसिल, देखिए 5,000 रुपए ऑलरेडी पेंशन मिल रही Yes, है। Lordship, ma'am. शी इज अलोन। Yes, Lordship. अब उनकी वाइफ और बच्चे भी हैं, Yes, Lordship. तो उनको भी फैमिली देखिए। So at least 15 कर नहीं नहीं नहीं, 10 is reasonable, my lord. 10,000 ठीक है। अब देखिए माँ के लिए 10,000 और 6,000 पेंशन, 16,000 रुपए में शी कैन। घर भी खुद का है ना, किराया थोड़ी देना पड़ रहा है, और नहीं देना पड़ रहा है भाई। जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिला उसमें बच्चियों की शादी कर दी, my lord. अब फिर भी पैसा बचा हुआ है। अब ऐसा कि देखिए, उनकी भी अपनी लाइबिलिटी रहती है, हर किसी को मैनेज करना पड़ता है। एक आदमी में 16,000 रुपए खर्चा करने के लिए पर्याप्त है। आई थिंक ठीक है, हर महीने देंगे मैडम। आपके क्लाइंट को हम ऑर्डर करते रेगुलरली विदाउट इंटरवेंशन बिना। ठीक है काले साहब, 10,000 रुपये अब नहीं बढ़ेगा ये। अब फैमिली को भी सेटल होने दो भाई, उनकी भी बच्चे। वो जब से रुके थे वो वाला भी पैसा दे दिया था। अब वो धीरे धीरे देगा भाई, ऐसा जी, थोड़ी ठीक है, है, कहाँ से दे पाएगा? दिस इज इनफ साहब, आपके कोर्ट नहीं, का आप, ऑर्डर दिया। आपको नहीं है ना, आपको क्या करना है वो तो वो बोलेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, व्हाई ही इज इंटरेस्टेड। हाँ। तो आप बोल तो रहे हैं। अरे काले साहब ठीक है, देखो जी जी ठीक है ना, 10,000 रुपये मिल गया ना। आप जो ऑर्डर कर दो। मैंने ठीक कहा है। तब साहब ने अच्छा कितने दिन से नहीं मिला ये बताओ? जी कितने दिन से नहीं मिला? कब से नहीं मिला, रोक दिया। नहीं देना। 2018 नहीं। नहीं देना है बस 10,000 रुपये। हम बस 10,000 रुपये पर्याप्त है, लिखो भाई। 15/11/2022 से हो गया। are जान दो भाई, funded बच्चा आप ही 1 का है, थोड़ी शांति बुद्धि उसको भी रहे। ठीक। लिखो भाई, द पिटिशनर हैज फाइल्ड पिटिशन sealing against the inaction of the inaction of his her son, who is violating the consent given while obtaining the compassionate appointment. Full stop. The check every month is yes, the learned the counsel for the petitioner would submit that the consent was submitted by the respondent number 4, contending that that he will look after the family members, mother, brother and sister, and if he unable to discharge his obligation, the 50% of his salary will be deducted. The things were running smoothly, but since 2022, the unfortunate incident taken place in the family, and the respondent number 4, 50,000 plus. Huh? 50,000 plus. The respondent number 4 started disowned his mother and the mother, which has necessitated the petitioner to file this petition. The counsel for the SSCL would submit that the respondent number 4 is getting salary of rupees कितनी है? So Lordship 79,000 rupees per month. Dumper operator, madam. है? Dumper operator. 79, हाँ, Substantial payment. हाँ, 79,000 per month. 79,000 per month. 876. हाँ, 79,000 rupees per month. As such, The the counsel for the petitioner would submit that petitioner R4 is getting 79,000 rupees per month. Therefore, at least 20,000 rupees per month should be given to her mother for treatment, for maintenance. Full stop. The learned counsel for the HCL would submit that the petitioner is also getting family pension of rupees 5,500 rupees per month, and has also received certain real dues of her husband, out of which she must have saved something to take care of herself. Full stop. The counsel for R4 would submit that they are ready to pay rupees 10,000 per month. Considering this submission, it is directed that since the petitioner is already getting pension of rupees 5,500, and now the R4 will pay rupees 10,000 per month, that will be sufficient to maintain the petitioner herself. Considering this aspect of the matter, it is directed that the petitioner will, the R4 will pay rupees 10,000 to the petitioner
per month without any failure. If any default is committed, the rupees 10,000 will be deducted from the salary of the petitioner and will be credited into the account of petitioner. ठीक है, बिना अगर आप दे दी तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले महीने की तनख्वाह से कट जाएगा. बिल्कुल Yes, सर। Lordship. ठीक है. With this observation, the petition disposal.